to the present modern age and recorded their achievements once and forever. The wisdom, intellect, and curiosity the people in the past also come under the study of history. History also tells us about the great ideas and inventions that involved in the past and made our life easier and comfortable. The study of history enables us to learn and understand about the culture, customs, and traditions of the people in other countries as well. Okay, students, now we will read to study the past. The human race has a history of millions of years. As per the evolution of humans, the historians have divided this past era of millions of years into two periods, prehistory and history. The period of human development when they didn't know how to read and write is called prehistory. So students, जो हमारे इतिहासकार थे, इन्होंने हमारे इतिहास को दो भागों में बांटा, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री. तो प्री हिस्ट्री में हमें उस समय की जानकारी मिलती है जबकि मानव लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानता था. दे हैव नॉट लेफ्ट एनी रिटन रिकॉर्ड्स फॉर अस टू रीड एंड लर्न अबाउट देम. Therefore, our knowledge about them is based on the available sources of study like fossils, bones, tools, weapons, shelters, etc. used by the humans in that period. तो बच्चों, इस पीरियड की जानकारी हमें केवल उन चीज़ों से मिलती है जो रोज की, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जिस तरह के वो हथियार का प्रयोग करते थे, बर्तन प्रयोग करते थे, कुछ औजार, हथियार और बहुत सारी मिट्टी के बर्तन, ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं जिससे कि हमें उन लोगों की जानकारी प्राप्त होती है. उस समय का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि प्री हिस्ट्री हम कह सकते हैं, प्री हिस्ट्री का हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है. The period of history starts with the invention of writing. Written records of these periods are available to us. We can read and learn about the people, events, and the society of this age around a few thousands of years ago. The people wrote on palm leaves, stones, rocks, pillars, copper plates, clay, tablets, and skin of animals. In this period, paper was not available to write on. These written records give us a lot of information like names of the peoples, events associated with them, places where they lived in, food they ate, etc. You can see the picture of palms, leaves and copper plate कि किस प्रकार स्ट्रीट टाइम के जो मनुष्य थे वो उस समय चूँकि पेपर अवेलेबल नहीं था, पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो अलग अलग चीज़ों पर, धातुओं पर, ताम्रपत्रों पर, पत्तों पर लिखते थे, उस जिससे कि पढ़ने से हमें उस समय की जानकारी मिलती है. नेक्स्ट इज टाइम एंड हिस्ट्री. बच्चों, आपने अधिकतर जब भी आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते होगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी एविडेंस, कोई भी इंसिडेंट हमें जब बताया जाता है तो उस समय बीसी या एडी का प्रयोग किया जाता है. सो वी शुड ऑल्सो नो what is BC and what is AD. BC means before Christ and AD means Anno Domini or in the year of Lord are the two terms used frequently in the study of history. The years before the birth of Jesus Christ are written as BC. तो बच्चों, जब BC लिखा होता है यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व. If an event took place 200 years before the birth of Christ, it is written as 200 BC. They are counted backwards as 200 BC will come before 199 BC. तो बच्चों, ये जो था हमारा जो ईसा पूर्व जो BC था, इसमें हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग लेते थे, यानी कि 200 पहले आता था, 199 BC उसके बाद आता था. On the other hand, the years after the birth of Jesus Christ are written as AD. और जो एरा ईसा मसीह के जन्म के बाद से प्रारंभ होता है वहां पर हम लोग एडी लिखते हैं. इफ एन इवेंट हैपन 200 years आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, देन इट इज रिटन एज 200 एडी. तो मतलब जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के 200 साल के बाद हुई तो उनमें हम 200 एडी लिखते हैं. दे आर काउंटेड फॉरवर्ड एज 200 एडी विल कम आफ्टर
199 AD। तो इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग होती है जिसमें कि 199 के बाद 200 आता है। BC and AD are used universally all over the world to show the occurrence of events in the past. Some other terms you can across quite often in history are decade, century and millennium. तो बच्चों BC और AD के अलावा हम लोग यूज करते हैं डेकेड, सेंचुरी और मिलेनियम टाइम शो करने के लिए। A decade is a period of 10 years, while a century is one of 100 years, and millennium refers to a period of 1000 years. You can see the picture of timelines here. Okay, students? Students, now we will read the geographical framework. The geography of a land greatly influences the history of a century and has a powerful impact on its history. Geography influenced a powerful impact on its history. Geography influenced the location of early settlements around the world. The early civilizations of the world were located in and around river valleys. The plains of the Ganga and Indus became the cradle of several kingdoms in the past. Abundance of water, fertile soil to grow crops, rivers helped in the expansion of trade. All these conditions helped the civilizations to flourish in the river valleys. The history of the Indian subcontinent has also been influenced by the physical features of the land. For example, the Himalayas, the seas and oceans, the northern plains and Deccan Plateau. बच्चों, इतिहास में हमारे जोग्राफिकल फ्रेमवर्क का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जहाँ का जोग्राफिकल फ्रेमवर्क अच्छा था जिस जगह का, वहाँ पे हमारे प्राचीन समय में जो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते थे। जैसे कि गंगा नदी, सिंधु नदी, जैसा कि हम जानते हैं इनके किनारे सभी सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमें रहने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ें इजीली अवेलेबल थी। पानी जो कि हमारे लिए जीवन है, जिससे कि हम खेती भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो नदी घाटी के किनारे ये आसानी से हमें मिल जाता था। इसलिए ज़्यादातर सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों के किनारे ही हुआ था। नाउ वी विल रीड द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, की उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे अब हम बच्चों, जिनसे कि हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। हिस्ट्री हैज़ टू डिफरेंट सोर्सेज मटेरियल्स, literary and archaeological sources. These sources are used by the historians to study history. तो बच्चों, प्राचीन काल की जानकारी के बारे में जो भी हमारे स्रोत है जिनसे हमें जानकारी मिलती है, तो उनमें सबसे पहले हम लिटरेरी सोर्सेस से के बारे में स्टडी करेंगे। लिटरेरी सोर्सेस मीन्स साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड एनी रिटन record or account. Most of the ancient Indian literature is religious in nature. The books that we read are first written by hand or typed on the typewriters, and now on computers as well. In this form, a book is known as manuscript. Manuscripts are the great and authentic sources of information about the past. Today, most of these manuscripts are preserved in libraries and museums. It has no definite dates of events and kings, such as the Purans and the epics. Vedic literature also does not have any trace of political history, but it gives a reliable glimpse of culture and civilization of that age. तो बच्चों, प्राचीन काल में ज़्यादातर जो स्रोत होते थे वो रिलीजियस होते थे, यानी धर्म से संबंधित होते थे, जिससे कि उस समय की राजनीतिक दशा के बारे में हमें जानकारी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमें उस समय के कल्चर के बारे में हमारे पुराणों से और हमारे ग्रंथों से जानकारी मिलती है। The epics such as Mahabharata, Ramayana, Jain and the Buddhist religious texts provide us with some important sources of historical information, which mostly contains religious messages. Upanishads are the chief source of knowledge about the Indian philosophy. Upanishads are ancient texts from India that were composed orally in Sanskrit between about 700 BCE and 300 BCE. In the Upanishads, we get a glimpse into the working of the minds of the great Indian thinkers who were unhampered by the tyranny of religious dogma. Political
authority, the pressure of public opinion seeking truth with single-minded devotion, rare in the history of thought. There are also political treatises that deal with the principles of administration along with the sources describing the deeds and achievements of the kings and emperors.